Very, very happy to welcome Kamlesh. कसा आहेस? मजेत सर. कसा आहेस? Hello. एकदम मजेत सर. So Kamlesh comes from Malegaon, a town near, a place near Nasik. He comes from a farmer family, and absolutely it is as close as the innovation can be close to, ground. That's what I would say. And he came to first limelight, if I had to say, when in Shark Tank, when he had presented himself in Shark Tank and got funding from there, and that's when he came to the light. But before that, he was very famous in his town. He was called Jugadu Kamlesh. He's called Jugadu Kamlesh because he can get anything done. Nobody knows what he's doing, and he goes to the shops and brings a lot of things, and nobody knows what he's going to do and if anything he's going to do. So this session will be in Hindi, Marathi, a little bit English I will call. But Kamlesh, खूप आनंद झाला तुला इथं बघून. धन्यवाद धन्यवाद सर. So कमलेश बताओ सबको आप क्या करते हो? यस. मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि इंग्लिश अभी सीख रहा हूँ मैं. मतलब आप लोगों के साथ रहूँगा तो जल्दी इंग्लिश भी सीख जाऊँगा. तो मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ. तो मेरा इंट्रोडक्शन देने का स्टाइल थोड़ा अलग है. मतलब शार्क टैंक में जो लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया मेरा थोड़ा अलग था, तो मैं उस तरह इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ. हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड. और मैं हूं मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश. मैं मेरे जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं. उससे पहले थैंक्स नेस्कॉम टीम, मुझे यहाँ बुलाया. मेरे जैसे छोटे से गांव के लड़के को इतना बड़ा स्टेज दिया, इतना बड़ा मंच दिया और इतने बड़े लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट करने का मौका दिया. इस वजह से सब लोगों को थैंक्स, नेस्कॉम को थैंक्स, और आप जितने लोग बैठे हो उनको थैंक्स. मैं एक मालेगांव, नासिक जिले के मालेगांव तालुके में एक छोटा सा गांव है मेरा. मैं हर जगह पे गया ना तो मेरा गांव का नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि मेरे गांव से मेरा नाम है. तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ. मैं शार्क टैंक पे भी गया ना तो मैंने मेरे गांव के बारे में बताया, क्योंकि जब गांव का नाम लिया ना सर तो एक मतलब अलग ही फीलिंग आई थी जब मैंने इतने बड़े मंच पे मेरे गांव का नाम लिया. तो मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूँ, और एग्रीकल्चर फैमिली में ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरे. तो सर ने मुझे बताया था, पूछा था कि आपका इंस्पिरेशन क्या है. तो मेरा इंस्पिरेशन कोई नहीं है. मेरा इंस्पिरेशन है मेरे फार्मर, मेरे माँ, मेरे पापा. यही मेरा इंस्पिरेशन है. ये आपको कल्पना कैसे आई क्या करने की, और क्या करते हो ये बताओ अभी. मैं खेती करता हूँ. खेती में जो प्रॉब्लम मुझे आते, जो मेरे किसान भाइयों को प्रॉब्लम आते, मैं जुगाड़ से सॉल्व करता हूँ. एक्चुअली मेरा नाम जुगाड़ू कमलेश रख दिया है सब ने, क्योंकि जुगाड़ मतलब एक लोगों को ऐसा हंसते थे लोग पहले, मतलब जुगाड़ है, कुछ भी जुगाड़ करता है. लेकिन मेरे एक जीजू है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. तो मैंने एक बार उनको बोला कि जीजा जी सब मुझे जुगाड़ू कमलेश बोलते हैं. तो वो बोले कोई बात नहीं, आज जिस नाम पे लोग हंस रहे वही नाम एक दिन ब्रांड होगा. आपका प्रोडक्ट क्या है बताओ. यस, मेरा एक छोटा सा प्रोडक्ट था. एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर में काम कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है ना अभी तक नहीं हो रहा है. जैसे छोटे छोटे किसानों को छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको ज़्यादा पैसा कमाना है. किसी को छोटा कुछ बना के मतलब इतने नीचे लेवल तक नहीं जाना है. तो मैंने एक एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन बनाई थी. मेरे पापा स्प्रे करते 20-30 लीटर का टैंक पीठ पे लेके पूरे खेत में, और दिन में 30-40 पंप स्प्रे करना ये सिंपल काम नहीं. मुझे भी लगता था ये सिंपल काम है. जब मैंने लिया तो मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम सॉल्व करें. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ. मैंने छोटा सा एक डिज़ाइन बनाया, वो भी दिमाग में, और वेल्डर के पास गया और वेल्डर के पीछे लग गया कि मुझे ऐसा ऐसा एक मशीन बनाना है. और वो मशीन मैंने बनाया और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो उसके बाद
शार्क टैंक के बारे में पता चला और मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया और मैं शार्क टैंक तक पहुंच गया। आपकी टीम क्या है? यस, मेरी टीम छोटी सी टीम है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, वो कंटिन्यू साथ में रहता है। एक्चुअली उसे मैं हर जगह पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे नहीं लेके आया क्योंकि मेरी बीवी को भी लेके आया, क्योंकि उसको भी लगता है उसे ही साथ में लेके जाते, मुझे नहीं घुमाती। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है? शार्क टैंक में शूट जब हुआ तब मेरा और मेरे बीवी के साथ मस्त ऐसे हाथ पकड़ के शूट हुआ। मस्त, बीवी भी खुश थी, मैं टीवी पे दिखने वाली हूँ, और उन्होंने वही सीन काट दिया। और उसके बाद मुझे जो झेलना पड़ा है आज तक मैं झेल ही रहा हूँ। तो आप बताइए, पैसे मिलने के बाद कैसे लगा आपको? पैसे मिलने के बाद तो हर एक को अच्छा ही लगता है सर। मुझे 30 लाख का चेक मिला, वो देखे मुझे चेक मिला, उससे ज्यादा मैं गांव में जाके 30 लाख बोलूंगा, ये ज्यादा खुशी हुई। तो फिर ऐसे बताओ, उसके बाद किया क्या आपने पैसे मिलने के बाद? सर वो पैसे तो मेरे बैंक पे नहीं आए डायरेक्ट, वो कंपनी के अकाउंट में हुए, तो वो सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास था। तो उस पे ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट चालू किया हमने। प्रॉब्लम ये थी, ये मैंने प्रोडक्ट बनाया था एक जुगाड़ बना के, उसको प्रॉपर अगर बेचना है तो उसे प्रॉपर इंजीनियर भाइयों के सपोर्ट के बिना वो बन नहीं सकता। तो वो प्रोटोटाइप बने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये प्रोटोटाइप मेरे खेत में चलता था, बाकी खेत में नहीं चलता था। क्योंकि दिक्कत ये थी, क्रॉप जो अपनी जमीन जो है ना, हर एक जमीन अलग अलग है। मतलब मेरे यहाँ पे मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट है, तो नासिक में जाओगे थोड़ा हार्ड है, तो वो दिक्कतें आती थी। तो ऐसे करते करते हमने 2-3 ऐसे 5 प्रोडक्ट बनाए, और एक फाइनल प्रोडक्ट अभी रेडी है, उस पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि मैं उसको ना थोड़ा अच्छे से बनाना चाहता था। तो उस वजह से मेरी प्राइस हाई हो गई, और मैं जो चाहता था वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्राइस हाई करके फायदा नहीं सर। मुझे छोटे किसानों के लिए काम करना है, तो छोटी सी प्राइस में, कम प्राइस में वो किसान को भी अफोर्डेबल हो, इसलिए मैं छोटी सी प्राइस में उन्हें बेचना चाहता हूँ। तो अभी हम प्राइस पे काम कर रहे हैं, वो प्राइस हम थोड़ी थोड़ी कम करेंगे और किसानों को बेचेंगे। तो क्या प्राइस को बनाना चाहते हो अभी सर? मतलब मैंने जो प्राइस में अभी बनाया है, जिसकी प्राइस जा रही 25,000, तो मेरे को 10, मतलब मैं ये प्राइस में बनाना चाहता हूँ कि मेरे पापा उसे खरीदे। जब मेरे पापा उसे खरीदेंगे तभी मैं सारे किसानों को दे पाऊंगा। तो अभी करोगे क्या आगे? आगे कुछ नहीं करना है, किसानों के लिए काम करना है। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? किसी को किसान बनना ही नहीं है, किसी को खेती में काम करना ही नहीं है। और दिक्कत ये है, जो खेती में काम करता है उसकी शादी भी नहीं होती। मेरी तो हो गई, अच्छा हुआ। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि लोगों को ये लगता है कि खेती करेंगे तो मतलब पूरे समाज में ऐसा लगेगा ये आदमी खेती करता है तो उसकी कोई ये नहीं, मतलब ये छोटा आदमी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी भी खेती करता हूँ, पहले भी खेती करता था, लेकिन आज मेरा जो छोटा मोटा नाम है सर, वो खेती की वजह से ही है। अगर हमारे जैसे नौजवान खेती करना छोड़ देंगे तो आप सोचो क्या कितनी प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है कि एक टाइम आया था सब कंपनियां बंद थी, कोरोना के पीरियड में सारी कंपनियां बंद थी, खाली एक ही कंपनी चालू थी, वो थी किसान की। और सर वो लाइफ में कभी बंद नहीं हो सकती। तो आप बताइए, इस जर्नी में आपको कब ऐसा मोमेंट आया कि आपको ऐसा लगा कि बहुत दुखी हो गए, आपको बहुत प्रेशर आ गया? सर मैं दुखी तो तब हुआ था जब शार्क टैंक का एपिसोड आया और लड़कियों की मैसेज आनी शुरू हुई। तो दुखी इस बात से हुआ कि मेरी शादी हो चुकी थी। फिर ठीक है। तो बताइए मुझे, आपको कोई कोलैबोरेशन के लिए वगैरह लोग आए थे आपके पास? जरूर जरूर सर। और आपने बताया कि मैं कब डिमोटिवेट हुआ। एक्चुअली सर जो किसान फैमिली से है ना, वो कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे किसान ऐसे है ना, वो ऐसे बोलते हैं ना, कोई ऐसा जमीन में पैसा फेंकता है क्या? आपने कभी जमीन में पैसे फेंके? नहीं फेंके ना। हमारा किसान ऐसे जमीन में पैसे फेंक देता है, उसको पता भी नहीं कि ये वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी ज्यादा बारिश होती है तब फसल खराब होती है, कभी बारिश ही नहीं होती तभी फसल खराब होती है, कभी फसल अच्छी आती है तो मुनाफा नहीं मिलता। किसान को हर जगह से प्रॉब्लम है, लेकिन किसान खेत में ऐसा डट के खड़ा है। मतलब मैं मेरे पापा को देखता हूँ ना, अभी बारिश हमारे यहाँ बहुत हो रही है, पूर चालू है, मतलब पूरा
मतलब जो हमने डाला है ना वो भी खराब हुआ है। लेकिन मेरे पापा क्या बोलते पता है, चलो ठीक है, इस साल नहीं मिला ना, अगले साल निकाल लेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। मतलब हम टेंशन लेते ही नहीं सर। अच्छा है। तो अभी बताओ, आपको क्या लगता है आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है? सर मैंने वही पे शार्क टैंक में बताया था ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और मतलब मैंने बताने से कुछ नहीं सर, मेरे को जितनी ऑर्डर्स आई थी, मतलब कर्नाटक गवर्नमेंट का शार्क टैंक के बाद में मुझे कॉल आता है कि हमें 20,000 पीस का ऑर्डर चाहिए और ये हमें किसानों में बांटना है। आप जो छोटा काम कर रहे हो किसानों, मतलब जो काम कर रहे हो वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम हर एक किसान तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा काम है। तो क्या हुआ फिर? लेकिन दिक्कत ये थी कि अभी मैं जुगाड़ तो नहीं बेच सकता, जुगाड़ मेरे लिए मेरे खेत के लिए काम आएगा, लेकिन मैं प्रॉपर किसानों तक मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, उसे प्रॉपर करके वो काम में आए। ऐसा ना मैं बेच के पैसा कमा लूँ और उसके बाद में भूल जाऊंगा, नहीं सर, मुझे किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तो मैं प्रोडक्ट अच्छे से बना के मैं बेचूंगा। तो आपका सपना क्या है? सर मेरा सपना बहुत बड़ा है। मेरा सपना यही है कि हर एक किसान को, मतलब मैं किसान हूँ ऐसे बोलते वो शर्म ना आए और हर एक किसान को लगे, गर्व से वो कहे कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो ये मेरा सपना है सर। क्या करोगे उनके लिए? उसके लिए पहली बात तो मैंने शार्क टैंक में भी बताया था, मुझे एक क्वेश्चन पूछा था अपने गजल अलग मैम ने कि आपने ये प्रॉब्लम किसी कंपनी में नौकरी करके क्यों नहीं सॉल्व की। तो मेरा जवाब था कि हम किसान हैं, हम किसी का मतलब किसी के गुलाम नहीं बनते। नौकरी करूंगा तो 24 घंटे के लिए किसी का गुलाम बनूंगा, और हम किसान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं बनते। सर आप हर एक किसान को ये पूछोगे ना कि आप छोटी मोटी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करते, तो हर एक का जवाब ये आएगा कि हम किसान हैं, हम गुलाम नहीं बनते। और किसान राजा है, राजा रहेगा और राजा ही रहेगा। अच्छा है। आपने एक मुझे बताया, ये ब्रांड इतना अच्छा आप बना दिया है, उसका कोई बेनिफिट नहीं कर देते बाकी लोगों के लिए, बाकी फार्मर्स के लिए? ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे आपकी कंपनी तो नहीं बड़ी हो जाएगी? यस सर, मैंने जो कैसे जुगाड़ू करोगे? कमलेश का नाम है ना उसे ट्रेडमार्क ही कर लिया सर, क्योंकि ये नाम के लिए मेरे बहुत कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए ऑफर आई थी, बड़े बड़े कंपनी की ऑफर थी कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि हमारे लिए काम करो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जुगाड़ू कमलेश नाम से ऐसे बहुत सारे जुगाड़ू कमलेश हैं अपने इंडिया में, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा सर। मतलब मुझे शार्क टैंक मिल गया, मेरे के लिए ये नसीब की बात है, लेकिन हर एक को शार्क टैंक नहीं मिल रहा है सर। तो ऐसे लोगों को साथ में लेके वो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर, उनके पास हर एक प्रॉब्लम पे इनोवेशन रेडी है, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों को मैं इकट्ठा करके इनके साथ में मैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहता हूँ, वहां से किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और छोटे छोटे गांव से भी एंटरप्रेन्योर बने। जब से मैं शार्क टैंक से आया हूँ ना, तो मुझे मच्छी वाला भी पूछता है कि मेरा वैल्यूएशन इतना इतना है सर। और क्या बताना चाहोगे, बोलो एक लास्ट। हाँ, आप बताओ। और एक लास्ट एक बात है सर। दिक्कत ये हुई थी कि शार्क टैंक का एपिसोड चल रहा था, अभी टीवी पे एपिसोड चल रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल के आया हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं जब मराठी में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, तो मुझे बात करने नहीं आती। सब मतलब मेरी लैंग्वेज से हंसते थे पहले भी। और मैं एक्चुअली थिएटर आर्टिस्ट था सर, छोटे मोटे एक्ट करता था, मुझे बहुत सारे फिल्मों से निकाला गया है मेरी लैंग्वेज की वजह से। लेकिन एक चीज़ है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैंने छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म की थी, मैं मुंबई में जाता था ऑडिशन के लिए, मेरी लैंग्वेज मेरे कपड़ों के वजह से मुझे निकाल दिया जाता था कि तू गाँवठी है, मतलब देहाती है, तू फिल्म लाइन के काम का नहीं है। तो उसके बाद में ना सर मैंने ठाना था कि लाइफ में एक दिन ऐसा लाऊंगा कि मेरे गांव में ये फिल्म सिटी के लोग बुलाऊंगा। सर वो हुआ, शार्क टैंक का जो मेरा स्टोरी शूट हुआ था वो मेरे गांव में हुआ, लेकिन और मेरा ये सपना था सर, मुझे हीरो बनना था, लेकिन जब वो मेरे गांव में आए तो मेरा कुत्ता भी हीरो बन गया, वो भी टीवी पे दिखा, मेरा बेल भी दिख गया, मेरे गांव के बूढ़े बूढ़े आदमी थे वो भी दिख गए, तो मेरे लिए वो खुशी की बात थी सर। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी शुभकामनाएं, और हमें लगता है हम आप रियल लाइफ में हीरो बन जाओ, तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बिग हैंड। Hello. Good evening, everyone. This is Manu. I'm here to talk about what will be the future of humanity and how we see space exploration taking things forward. So the fundamental goal for us with
Ethereal X was to aid in civilizational progress as much as we can. As a company, what we're essentially doing is something that's not been done in the last 5+ decades. The more details I will share when I'm having a conversation with Kishor in a while. But a brief introduction. We're building the world's first fully reusable medium lift launch vehicle. What that essentially means today is that when any rocket takes off from the launch pad and you see it go into orbit, or when it lights up the night sky, you see that parts of it are separated. And you see that SpaceX was able to bring their booster stage back. However, the rest of the 25-30% of the rocket is still being dumped in the atmosphere or dropped in the ocean, right? So this, and today, to get 1 kg into orbit, on average, it will cost you about $12,500. So what we did was, we thought, why not we operate rockets like flights? And the only way to do that was if you were able to bring the entire rocket back. So today within India, you are able to fly anywhere sub 10,000 rupees, provided you book at the right time, because your flights are reusable. But just imagine that your Boeings were not reusable. In that case, what would you do? As customers, you would end up covering the entire cost for the plane. And that's the case with 99% of all the rockets across the globe. And the reason why I say 99% is there is one operational player who's reusing their booster stage, which is SpaceX. What we're doing is we're changing the whole game, right? Instead of bringing a part of the rocket back, we're bringing the entire rocket back. So at a unit cost level, what we can do is take anything into orbit at literally just $350 per kg. So this is what we're doing. And the vision for us was to, like we said, today we have over 10,000 plus space tech companies across the globe, and you have over 150 launch companies registered. And space is expensive for the same reason why Maggie costs you 400 rupees in Leh, right? Getting there is an expensive affair. So it was a very logistical problem that we had to solve, and we had to just solve that through technology. And the reason why this has never been done before, and the reason why in the last 5 or 6 decades this has never been done before, is because of one governing challenge, which is the re-entry heat. And we thought, how do you go about solving for this particular issue, which is re-entry heat? We saw the space shuttle trying to bring back the Columbia, the Discovery, but for every single time they flew a space shuttle, they were spending $1.1 billion in refurbishment, while a new one only cost about $800 million. So we thought, the only way to really solve for this is to not fight the re-entry heat and utilize that. And that's precisely what we're doing at Ethereal X. We built from scratch a completely new rocket engine cycle, something that's not been done in the last 5+ decades. Now, this coupled with our deployment system allows us to operate our engines in both vacuum and atmosphere efficiently, a world's first. And essentially what this means is that instead of fighting the re-entry heat through thermal tiles and thermal protection systems, we're just utilizing that to run our engines, or the engine cycle per se. So what our rocket can do, essentially, we can put about 24.8 tons to the low Earth orbit in expendable configuration. And to the low Earth orbit, as in about 400 kilometers, we can also do 8 tons in fully reusable, and partially reusable about 22.8 tons. The reason why there's a decline in payload capacity as and when the reusability configuration increases is because, let's assume you want to put a rocket into orbit, right? So in that case, assume this mic is a rocket. It essentially has fuel and payload. But if you want to bring your rocket back, that means you want to carry as much more fuel as you can. But the mass of the rocket is not changing, and only the mass fraction changes. Meaning if you want to bring your rocket back, you retain more fuel, so you end up being able to carry lesser payload, right? So we can also do geostationary transfer orbit. That's up to around 35,000 kilometers altitude. And we can also do translunar injections, where we can put payloads onto the surface of the moon. So that's what we are doing. Like I told you, we see 400 million years back as life, we mustered the courage to venture out of the oceans and look at from fishes to what we've built, large-scale structures, cities, skyscrapers, and whatnot. Now we've mustered the courage as a civilization to exit orbit. And since 2008, ever since the space station has been in orbit, the entire human population has
not been on Earth. There's always one person manning the space station, right? So we're already a spacefaring civilization, and now we see that there's going to take leaps and bounds, and the commercial aspects of that are huge as well. So I'll keep it short. We do not wish to be witnesses to history, but rather its authors. And I'll just have a fun conversation with Kishor for all of you. Thank you. So Manu, he doesn't like to be compared with SpaceX somehow. I don't know, he will tell the reasons. But I really think this is the kind of a company has to come out of India. Give him a big hand. This is very mysterious to me. And apart from the fact that he's, 26-year-old? Yeah. Just 26-year-old. So I think, Manu, why don't you come this side? So it's that's a really a great thing. So I will just ask a few questions. So what do you think, where this rocket can go from your rocket when it is ready to launch? Where will it go? How long it can go? So like we said, we can target 3 different orbits. We can do the lower Earth orbit, which is up to 400 kilometers. And we can also do middle Earth orbit between the lower Earth orbit and the geostationary transfer orbit. And we can also do geostationary transfer orbit, which is up to 36,000 kilometers up in space. To give you perspective, Kármán line is roughly at 800, about 85 to 100 kilometers range, where you start losing your gravitational pull. And so that's the edge of space, right? Kármán line is at about 85 to 100, and beyond that, it's all space. So we can go as high as even 65,000 kilometers to do the translunar injections. Do you go to moon or not? Yes, we can. Yes. We can put 1.8 tons onto the surface of the moon. Very good, very good. Yeah. Now, tell me, what is the application? Why would so many rockets will be there? Brilliant. So, so today, everything that we do, right, be it satellite, be it your navigation, the Google Maps that you use, network, telecommunication, surveillance, a big part of defense applications, all of it has to do something with space. And we are looking at roughly 30,000 satellites that has to go into orbit in the next 10 years. And you're also looking at roughly 14,000 metric tons of payload that need to go into orbit in terms of commercial space stations, in terms of what I essentially mean by that is, see, satellites are for all the end user case applications, right? Today, banks provide loans to you based on satellite analytics data, based on crop analytics, thinking whether or not this farmer can get a loan done. Maritime operations, monitoring all of those. Now, these are the satellite-based applications. But in orbit, there's a separate, complete ecosystem where you have in-orbit refueling stations for satellites. Then now space hotels are being built with the International Space Station being decommissioned by 2028. One module has already gone up. Now we are also setting up in the Artemis mission by NASA, of which even ISRO is a part, where you're setting up base on the moon. So according to the Greek mythology, Artemis was a sister of Apollo, right? So there's a sister mission. The difference is this time as humanity, we are going to the moon, but not to come back, to stay. Yeah. So there's a huge change in the way we look at things as of now. Great, great. So is it going to be manned, or it is going to be without a person always? So we are building a HRLV, a human rated launch vehicle, but our first few iterations are going to be unmanned, and then we'll test our escape systems and crew module systems, and then slowly we'll move into the manned space flights. So tell me, why did you think about this story? Why did you decided to go into space, which is like a mysterious thing for me at least, mythological almost? Well, I grew up listening to the Rig Vedas, and for me, it was the fundamental question of existence had always been key. And I grew up, my grandfather spent all the summers with me talking about all of this, right? And a grandfather's friend of mine, who was a professor in IIT Madras, spent the last 30 years of his life transcribing the Rig Vedas. And the fundamental purpose for us has always been about to learn about ourselves or the universe in a sense, right? So I figured there are two ways of looking at it.
One is inward learning, the other one was outward learning. I thought inward ke liye bahut time hai, so I thought I'll do the outward journey, and that's how I set out on my path to space, and hence the astronaut journey and so on. Very good. Thank you. So, did you ever imagine you being astronaut? Yeah, in fact, I'm a trained scientist astronaut candidate. In 2019, I was one of the 12 people selected for the NASA Spaceflight Opportunities Program aided Project Polar Suborbital Sciences in the Upper Mesosphere. I graduated as a scientist astronaut in 2022. Now, 3-4 of my friends are astronauts. I could have flown. But when I was in the US, something changed. I wanted to come back and build for the country. So that's how I worked with ISRO on the Project Gaganyaan and so on. Very nice, very nice. So tell me now, coming to some practical things. So have you raised funds? Have you raised money? So we are a young company, we started back in 2022. In the last 26 months, we've raised over $5 million. Now we are raising more for our first commercial launch that we'll be doing in 26 Q4. And more to go. And where will you invest all this in actual? So first, when is the first rocket going to go up? Yeah, so we are planning around March of 27, which is about 26 FY Q4. This money that we've recently raised, we are focusing on developing the engine. And in a few months, all of you will get to see on the news are that India's most powerful privately developed liquid rocket engine will be tested. Very good. Yeah. Now tell me, in this journey can't be easy, right? There has to be one moment, something which was difficult, right? I'm sure at the age you are, nothing looks difficult, but there is always a moment when you had a lot of difficulties and you have to find your way around. Is there one thing you can talk about? Yeah, I think it's a recurring experience for us. I mean, rocket science in itself is something that is not very forgiving whatsoever. So, and given that what we're doing is never been done in India, or a part of it never in the world before, there is sometimes where you look for direction and you know that there is nobody who can give you a direction. And you just have to figure it out by yourself. In the early stages, I would also say, two of my other co-founders, one of them, he was married, and he was a scientist at ISRO for over 10 years. So, when we left out, we had no funding and we were just on our journey back then. It was also difficult for us to find conviction, building the team and doing all of that. But I would say, to put it in one line, the tough part is yet to come, right? I think the more difficult part is yet to come, because one thing we've always believed in is that our problems must always be bigger, right? That's how we look at it from a engineering POV. So, yeah. So what is your view about Elon Musk? Yeah. Can I say off the records? But yeah. Fantastic guy, right? It's very unassuming of people to even question the kind of progress that he's brought in different verticals of technology. In space, 15 years back, nobody would have thought that a rocket could be brought back. It was science fiction. Somebody made it possible. Now you're looking at stuff like Neuralink, where you have you can make a blind person see things by having a neural implant in your brain, which has over 1 lakh neural connections that it can make with your neurons, and it can send in signals. See, giving output is something, but being able to give input to your brain—that's a whole different story. And then you have Tesla, and then so it's seldom that you see somebody just wakes up and changes the world as we see. It's once in a generation time. Absolutely. I do believe he was a entrepreneur of the century. Absolutely. It disrupted 3 business significantly. Amazing. So what will be you may not know right now, but what is your view? What will be the cost of a rocket? And what you think is the potential for your business? So we know exactly how the unit economics is going to look like. Today, SpaceX charges you about $62 million for a fresh vehicle launch on a Falcon 9. See, we can do it at literally $15 to $20 million, but we don't have to, right? Because then we are reducing the opportunity of earning money. So even if we undercut SpaceX by 30% and launch at $45 million, we're pretty good to go.
In terms of the market per se, like I told you, in the next 10 years, over 30,000 satellites need to go into orbit, and we are looking at phenomenal market for even 4 or 5 bigger players with at least $2 billion in revenue per player. Very good, very good. And you are looking at domestic market or export market? Today, since the Indian space economy is fairly new, the ecosystem is such that if we are, the self-sufficient ecosystem, space ecosystem has not been built. We are building that. But if you are looking at it from a POV where we are building from here, but then globalizing the entire products or services, then we have a huge market. So that's what we'll be doing. Last question, what is your dream? To, to aid in civilizational progress as much as I can. And I think that everyone should focus towards that, because we are at a brink where we don't know if our civilization will thrive or no in the next 30, 40 years with everything that we see across the globe. And I think we need to start focusing on bigger problems for energy, food, space travel, and all of this. So I just hope I can do as much as I can for that. Yeah. Thank you. For more content on tech and leadership, subscribe to Nasscom YouTube channel and press the bell icon to never miss an update.